Hello friends. So once again we are here with a new problem 3.66 from IE Erudov electromagnetism. Now this time the question is about the potential difference electric field between the parallel plate systems. This time. Now the question 3.66 is like so. We have these four parallel plates. We have these four parallel plates, conducting plates. सेपरेशन बिटवीन एनी टू प्लेट इज स्मॉल डी. दैट मीन्स कि प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 के बीच में ये डिस्टेंस डी है. प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 भी डी डिस्टेंस पे है. एंड दे ऑल, दैट मीन दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, दिस इज ऑल्सो डी, एंड दिस इज ऑल्सो डी. द प्लेट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी. This is given in the question. As you can see that plate number 1 and plate number 4, they are connected through a wire, conducting wire, again given in the problem. And plate number 2 and plate number 3, as you can see here, a potential difference is applied across them. Potential difference of V is applied between the plate and plate number 2 and plate number 3 with a terminal positive at plate 2 and terminal negative at plate number 3. So this is the question. Now we have to find the electric field in this portion, in this space, in this space, and in this space. In all three spaces we have to find the electric field, and after that we need to find the total charge on each of the four plates. How much charge is on plate 1, plate 2, plate 3 and plate 4. So here is the solution of this question. Again a different and unique solution for this question is this positive terminal, suppose that receives plus q charge, and suppose the negative terminal receives minus q charge. Positive terminal plus q and the negative terminal receives minus q. So positive terminal and this negative terminal, because of the applied potential difference capital V, let's say plus q charge is given by the positive terminal and minus q at the negative terminal. Now the distribution of charge on the parallel plate system का जो concept है, if we have system of parallel plates, then the charge distribution method is like you add charge on all the four plates. इन चारों प्लेट्स पे जितने भी चार्ज है उन सबको ऐड करा जाए, and half of that appears on the outermost sides. Since half of charge, so प्लस क्यू चार्ज अगर एक प्लेट पर है, माइनस क्यू चार्ज हमारे दूसरे प्लेट पर है, और बाकी की दोनों प्लेट्स पर हमने कोई चार्ज दिया नहीं है. दैट मीन इस पूरे सिस्टम के पास हमारे पास इस पूरे सिस्टम के पास टोटल चार्ज 0 है. हाफ उसका करेंगे तो दिस मीन्स आउटर साइड्स पर हमारे लिए चार्ज 0 अपीयर होगा, आउटर साइड्स पर. सपोज दैट इधर की तरफ जो चार्ज है वो q है, प्लस ऑफ स्मॉल q, बट दिस स्मॉल q इज़ अननोन फॉर अस, इसको निकालना है मुझे. एंड अगर ये प्लस q है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको माइनस ऑफ q मिलेगा. प्लेट नंबर 2 का टोटल चार्ज अगर प्लस ऑफ कैपिटल Q है तो आउट ऑफ दिस टोटल प्लस कैपिटल Q चार्ज अगर हम इस माइनस स्मॉल q चार्ज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस प्लेट के दूसरे साइड का चार्ज मिल जाएगा. यानी चार्ज ऑन दिस साइड ऑफ द प्लेट विल बी प्लस ऑफ कैपिटल Q माइनस ऑफ स्मॉल q, विच गिव्स मी q प्लस स्मॉल q. एंड अगर ये चार्ज इतना है तो इसके अपोजिट वाली सरफेस पे चार्ज निकालेंगे तो माइनस ऑफ कैपिटल Q प्लस स्मॉल q यहाँ पर चार्ज आएगा. नाउ इस प्लेट का टोटल चार्ज हमारा माइनस ऑफ कैपिटल Q है, तो इसका टोटल चार्ज माइनस कैपिटल Q माइनस ये वाला चार्ज, तो माइनस ऑफ कैपिटल Q माइनस दिस वैल्यू वो आपको हमें प्लस ऑफ स्मॉल q चार्ज प्रोवाइड करेगी. एंड अगर ये प्लस ऑफ स्मॉल q होगा तो इसके सामने वाली प्लेट पर चार्ज आएगा माइनस ऑफ स्मॉल q. दिस इज माई स्टेप 1. सो स्टेप नंबर 1 इन दिस प्रॉब्लम वॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Charge distribution is the step number 1 completed. Now the step 2. According to the charge distribution, we can see the direction of electric field.
according to the charge of distribution, we can see the direction of electric field from this plus to minus charge, E. Let's say it is E1. From this positive to negative, E2. Let's say it is E2. And from plus to minus, let's see another electric field, E3. So these are the electric fields E1, E2, and E3 between the plates. So that is my step 2, that we need to check the direction of electric field according to the distribution of charge. And remember, electric field must be from positive charge to the negative charge. Step 2, this was direction of E, done हो गया मेरा, direction of E completed. Now step number 3. Step number 3, the magnitudes of these electric fields, strength of these electric field. So strength, so step 3 is the strength of E, strength of E1, strength of E2, and the strength of E3. Now these electric fields, the strength of these electric fields can be obtained by applying Gauss's law. If you apply Gauss's law, you can find electric field E1, electric field E2, and then the electric field E3. I am not going to apply Gauss law here. That is a separate chapter, separate concept. I will just write the results of E1, E2, E3, but the hint of finding E1, E2, E3 is application of the Gauss law, which we have already discussed in a separate video in the separate class. So according to the Gauss law, if you find E1, then it comes as small q divided by capital A epsilon 0. E2 comes as capital Q plus small q divided by A epsilon 0. And then E of 3 comes as small q divided by A epsilon 0, where capital A is the area of plates, surface area of the plates. Now the concept, the same concept which we have used for many times, like potential difference between any 2 points A and B in a space of electric field is the integration of electric field E dot dr from point A to point B. We are applying this equation for the plate number 1 and plate number 4. So potential at plate 1 minus potential at plate 4 is integration of E vector dot dr from plate 1 to plate 4. And this integration will be performed by the breaking of limits. That is, first integration will be from plate 1 to plate 2. Second integration will be from plate 2 to plate 3. And the third integration will be from plate 3 to plate 4. This is how we will find this integration. From plate 1 to plate 2, from plate 1 to plate 2, if you look at the integration from plate 1 to plate 2, so from plate 1 to plate 2, from plate 1 to plate 2, so this is the direction from plate 1 to plate 2, and this is the direction of electric field E1. That means from plate 1 to plate 2, the dr vector and the electric field E1 vector, these two vectors are in the same directions. And therefore, this first integration will be E1 multiplied by this displacement d. Then same process E dot dr प्लेट 2 से प्लेट 3 में, तो प्लेट 2 से प्लेट 3 के जाएंगे तो ऐसे आंसर आएगा फ्रॉम प्लेट 2 तो प्लेट 3. Again E and d are in the same direction, so now it is E2 multiplied by d plus same process E3 multiplied by d. This is potential difference between plate 1 and plate 4. But since plate 1 and plate 4 they are connected by a wire, plate 1 and plate 4 they are connected by wire, the potential difference between the plate 1 and plate 4 must be equal to 0 under electrostatic conditions, since plate 1 and plate 4 they are connected by wire.
So it is necessary that their potential difference is 0. अब हम यहाँ पर E1, E2 और E3 की ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. E1, E2, E3 ये जो तीन वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख रहे हो, ये E1, E2, E3 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो E1 की वैल्यू इस जगह पर लाएंगे, E2 की वैल्यू हम इस प्लेस पर लाएंगे और E3 की वैल्यू इस प्लेस पर लाएंगे. और ऐसा करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. E1 here, E2 at this point, E3 at this point, and then you will get the result like, okay, I can write the complete expression also. Q by A epsilon 0 into D plus capital Q plus small q divided by A epsilon 0 times D and plus small q by A epsilon 0 times D equals to 0. दिस इज हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं. एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर इस स्टेप को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर आपको एक ऑब्जेक्टिवली रिजल्ट मिल जाएगा. अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू विल बी 0. दिस इज माई इक्वेशन 1. 3 स्मॉल क्यू आपको साफ दिख रहा है, एक स्मॉल क्यू यहाँ पर है, एक स्मॉल क्यू यहाँ पर है और एक स्मॉल क्यू यहाँ पर है. सो 3 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इज नाउ 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर ही बोली गई है, बिकॉज एक बार मैं फिर अगर क्वेश्चन को आपके सामने लाऊं तो नाउ रीड दिस स्टेटमेंट. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल V is applied between the plates 2 and 3. That means the plate 2 and plate 3, the potential difference between these two plates is given to us, capital V. And what was potential difference between the plate 2 and plate 3? The potential difference between this plate 2 and plate 3 was this middle integration. This middle integration was actually potential difference between the plate 2 and plate 3. That means this middle expression, which indicates potential difference between the plate 2 and plate 3, the value of this middle integration should be equals to capital V. And what was this middle integration for us? So this middle integration was E2 multiplied by small d, and that means E2 multiplied by small d, which is the potential difference between the plate 2 and plate 3, and that is given in our problem equals to V. So my second equation will be E2 multiplied by d equals to V. That implies me E2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कैपिटल Q बाय प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय A epsilon 0 into D and equals to V. Now this is my equation 2. Second equation. I have two unknowns here, plus capital Q and plus small q. These are my unknowns. This capital Q and this small q, these are my unknowns. And I have now two equations. This is the first equation between small q and capital Q, and this is the second equation between the capital Q and small q. Notice that capital V is not unknown for us. Capital V is given in the problem, so that is a known value. Now, through the simultaneous equations, you can solve a capital Q and then you can solve small q also. So capital Q and small q we can solve through the simultaneous equations, and if I solve it, the answer is capital Q and small q. If I solve, then the answer is like small q is, यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 3 स्मॉल q, माइनस ऑफ 3 स्मॉल q हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर टोटल माइनस ऑफ 2 स्मॉल q हो जाएगा, और इसके हिसाब से q की वैल्यू बन जाएगी माइनस A एप्सिलॉन V ओवर 2 टाइम्स ऑफ D, एंड देन कैपिटल Q की वैल्यू बन जाएगी विच इज़ माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल q, एंड जब माइनस लगाएंगे तो दिस इज 3/2 टाइम्स A एप्सिलॉन V ओवर D. आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये इक्वेशंस एक बार अपने लेवल पर भी सॉल्व करें, एंड देन आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा. दीज आर माई स्मॉल q एंड कैपिटल Q वैल्यूज़. ना स्मॉल q के नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब यहाँ पर पोलैरिटी गलत हो गई है. स्मॉल q इफ नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस साइड हैज़ टू बी अ नेगेटिव सरफेस एंड दिस साइड will become positive surface. And now answers. First question was, what was the electric field between the plates?
Notice here, electric field between the plates which are E1, E2, E3, they are already written here in terms of small q and capital Q. And now I know the value of small q, I know the value of capital Q. So if I substitute these values, small q and capital Q here, I can get the electric field E1, I can get the electric field E2, and I can get the electric field E3. By this method, we have also solved the other part, total charge per unit area. Through this diagram, you can find what is the charge on each plate, on each surface. You have to simply substitute the values of small q and capital Q. So आप इसको फाइनल आंसर में कन्वर्ट करें, प्रॉब्लम नंबर 3.66 फ्रॉम IE इरोडोव, एंड ये उसका सोल्यूशन है. आप स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को पुट करेंगे एंड चेक करो क्या रिजल्ट बनता है इसको. नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है. तब तक आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलते रहें, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको भी थोड़ा सा सिंपल एंड ईजी फिजिक्स समझने दें.